Moving on now, there is a massive outbreak unfolding in China, so every government is bracing for a possible spillover. China's health industry has reportedly been crippled by the sudden surge. Hospitals and crematoriums are flooded with dead bodies. Pharmacies are running out of medicines and ICUs are short on beds. It's the same situation as mid-2020. But this time, countries are trying to get ahead of the curve. India's health minister, for example, has shared a key meeting earlier today. He reviewed the COVID situation in India and also issued directives to state governments. Now, let me tell you quickly what the key takeaways have been. Number one, there is no change in the civil aviation guidelines, meaning flights to and from China will continue despite the rising cases. But sources are telling us that international passengers are already being tested randomly. Number two, the existing SOPs have been retained. So there is no legal compulsion, at least now, to wear masks in public places. But you are being advised to do it by the health minister. Same with booster doses. It's not compulsory to get the shot, but if you haven't, you better rush to the nearest vaccination center. For the moment, only 28% of India's population has got the booster shot. Number three, state governments have been asked to step up testing and tracking. They have been asked to send as many positive samples as possible for genome sequencing. This will help the government track new variants of the SARS-CoV virus, including BF.7, which is wreaking havoc in China. So far, 4 cases of this variant have been found in India. So the overarching message from the meeting was clear. There is no need to panic, but there is a need to be vigilant. In fact, the health minister has directed all officials to be alert and step up surveillance. He says the government is prepared to manage any situation. But one statement from his tweet stood out: COVID is not over yet. That was the message from India's health minister, and that's a message that we need to take to heart. We don't need to panic or create alarm, but we definitely need to be careful. COVID must always be on the back of our minds. Now, all these precautions are being taken because of what's happening in China. Their hospitals are flooded with COVID-19 patients. According to some experts, the country will see 3 waves of infections in the next 3 months. Put together, they could infect around 60% of China's population. And experts are also saying it could claim more than 1 million lives. Now, the problem with China has always been transparency. We don't know the actual scale of the crisis because on paper, their outbreak is manageable. China logged more than 25,000 cases on the 7th of December and 21,000 cases on the 8th. But 10 days later, those numbers suddenly dropped. According to the latest data, China is reporting just 2,000 cases per day. But looking at pictures that have come to us from China, those numbers simply don't add up. China is claiming around 90% of its population has been vaccinated. If that is the case, then questions will be asked about the efficacy of the Chinese jabs. How is it that cremation houses are packed despite 90% vaccination rates? Also, what does it say about the zero COVID strategy of China? It's a policy that requires 100% success rate. Even the slightest let-up can trigger a massive outbreak. And that's what China is learning the hard way. Let me quickly go across to Akhil Parashar, who's a journalist who's based out of Beijing. He's joining us on the broadcast, also someone who was down with COVID himself. Akhil, I hope you're feeling better. First things first, just how bad is the situation in China? Because, you know, reports that are coming in on from the Western media, especially some experts who are active on Twitter, seem to suggest that China is faring very, very badly as far as COVID is concerned. Thank you so much for having me in your show. Yeah, I would like to speak in Hindi. I will feel more comfortable. Right now I am very okay. मैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं ठीक हूँ एकदम बिल्कुल कि अभी लास्ट वीक मुझे कोविड हो गया था, मुझे और मेरी फैमिली को, तो लेकिन अब रिकवर कर चुके हैं. तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो चाइना में और खासतौर से बीजिंग में जो कैपिटल है जो चाइना की, उसमें अधिकांश जो सभी लोग हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं या रिकवर हो चुके हैं. जैसे मैं रिकवर हुआ, जिनसे भी मेरी बात हुई है सभी ने का यही कहना है कि वो पिछले हफ्ते या इस समय वो इन्फेक्शन है उन्हें या इन्फेक्ट हो चुके से अभी रिकवर हुए हैं.
तो इस समय जो सिचुएशन है चाइना में, इन्फेक्शन रेट बहुत ही हाई है और काफी सभी लोग जो है वो इन्फेक्शन उनको हो रहा है। तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोगों में माइल्ड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उतना ज्यादा हार्ड सिम्टम्स नहीं है, उनको ऐसा नहीं है कि वो सीधा वो आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं, उस तरह के से नहीं है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन है यहाँ पर, और जैसे अभी आपने खुद अभी मेंशन किए BA.7 है, तो उसका ये है कि वो इन्फेक्शियस ज्यादा है लेकिन वो उतना डेडली नहीं है, उतना वो लीथल नहीं है। तो इस वजह से लोग जो है वो 5 या 6 दिन में रिकवर हो रहे हैं। अच्छा अखिल, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ है कि लोगों को जमीन पे ट्रीट करना पड़ रहा है, मॉर्चरी में जगह नहीं है, क्रेमेटोरियम्स में जगह नहीं है, लाइन लगी हुई है, देखिए, पुलिस क्रेमेटोरियम्स को गार्ड कर रही है, तो वो सिचुएशन एक्चुअली ऑन द ग्राउंड है या नहीं है? देखिए, ये बात सही है कि क्योंकि जैसे अभी मैंने मेंशन किया है कि जो इन्फेक्शन रेट है वो काफी हाई है, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात, हम ये सब जानते हैं कि जो भी कोई इंसान किसी क्रॉनिक डिजीज से वो ग्रस्त है, या वो अगर उनको जैसे बीपी की प्रॉब्लम या उनको ऐसी कोई बीमारी है पहले से ही, और अगर उसको इन्फेक्शन होता है ये माइल्ड सिम्टम्स वाला भी, वो काफी डेडली बन जाता है और उसका जो रिस्क है डेथ का वो काफी हाई हो जाता है। तो आप ठीक है। देख रहे होंगे कि अधिकांश इसमें जो लोग हैं, जो पेशेंट है, वो बूढ़े लोग हैं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बूढ़े लोगों की का जो वैक्सीनेशन जो अ, है वो काफी कम है। और जैसे कि अगर मैं बताऊं कि 80 साल से उम्र के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका जो वैक्सीनेशन जो रेट है वो करीब 66.4% है, जो कि काफी कम है। तो इसलिए लोगों में, और ओके। जो सरकार है वो, उनको काफी चिंता है अपने बूढ़े लोगों की कि अगर ये और ज्यादा तेजी से ये फैलेगा तो जो बूढ़े लोगों की जो लाइफ है वो और ज्यादा रिस्क में चली जाएगी। तो इसी वजह से अब सरकार ने डोर टू डोर जो वैक्सीनेशन कैंपेन है वो चलाया है। साथ में मूवेबल यानी कि मोबाइल वैक्सीनेशन स्टेशन फॉर्मेशन किया है, स्थापित किया है, ताकि बूढ़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी ठीक है। वैक्सीनेशन दी जा सके। जैसे कि यहाँ के जो चाइना के जो चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट है मिस्टर चोंग नानशान, जिन्हें हम चाइना के फौसी भी कहते हैं, हाँ। फौची। तो उनका ये कहना है कि हाँ। स्प्रिंग फेस्टिवल के हाँ। आने से पहले बूढ़े लोगों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि उनकी लाइफ जो है, लाइफ थ्रेट जो है वो काफी हद तक कम हो सके। तो ये जैसे भी आप दिखा रहे हैं कि तस्वीर की हॉस्पिटल का, ये ओके। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेशेंट भर्ती हो रहे हैं, लोग ठीक जा है। रहे हैं हॉस्पिटल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे के पूरे चाइना में हाँ। इसी तरह की स्थिति, ऐसा ऐसा सही नहीं है। कई जगहों समझ पर गए। होगा, कहीं पर ओके। जहां पर सो you're कुछ ऐसे saying, Akhil, ऐसे कुछ Akhil, you are प्रोविंसेस हैं जो essentially telling उतना, us that the situation is bad, but it's not as bad as it is being made out to be. I think that's what you're trying to communicate. राइट, Thank you very राइट, much बिल्कुल। for joining us, getting us the view from Beijing, and putting these pictures in perspective for us. Thank you very much, because the last thing we need to do or want to do here in India is create panic. In fact, I did